Hello everyone, how is everyone doing? Hey guys, how is everyone doing? How is everyone doing? Please acknowledge me in the chat box if I'm audible enough and you are able to see me. फटाफट से chat box में yes लिख दीजिए अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और मुझे देख पा रहे हैं. Yes, yeah. How is everyone? So this particular class is mega menti. तो आज की क्लास में बच्चा बहुत सारे क्वेश्चंस हम करने वाले हैं. I hope that all of you are doing great. A very warm welcome to the official YouTube platform of Goprep Class 9th. I am Abha Ma'am, biology faculty right here at Goprep. I hope that everybody is doing great. So फटाफट से बच्चे क्या करिए अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए क्योंकि आज की क्लास में हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं. As I'm not well, तो थोड़ा सा वॉइस में दिक्कत हो सकती है, सो प्लीज कोऑपरेट. या तो फटाफट से अपने फ्रेंड्स को बुला लीजिए क्योंकि आज की क्लास में क्या करने वाले हैं हम बहुत सारे क्वेश्चंस. सो आई होप दैट यू हैव कंप्लीटेड द चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल, क्योंकि एग्जाम अभ्यास के सेशन में ये वाला चैप्टर तो हमने फिनिश कर दिया है, इस वाले चैप्टर को हमने उड़ा दिया है. तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम चेक करने वाले हैं कि ठीक है ओके हमने कितना अभी तक अंडरस्टैंड किया है अबाउट द डिजीजेस. सो यस गाइज यू हैव टू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ द सेशन, क्योंकि आज के देखते हैं आज की पर्टिकुलर मेंटी का लीडर कौन होता है. फाइन, प्लीज हाय सेटल डाउन. हेलो एवरीवन. हाय कृतगुन, रोनित, रिंकी, कविन, डायनामिक, what's your name? I don't know. Varsha. Fine. So yes, everybody settle down. Hi Raj Nandini. ठीक है, अभी पता चल जाएगा नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं. फटाफट से अपने फ्रेंड्स को भी बुला लीजिए सो दैट दे आल्सो एंजॉय आज का मेंटी और एक अच्छा सा कंपटीशन आज के मेंटी के लिए हो जाए. But before starting the session, I want to give you a very important information is that the next mini course is all about surface area का जो chapter है ना उसके problem के questions का mini course है. And if you feel like you're not comfortable, like okay दिक्कत हो जाती है while doing the questions, you're not able to know where to put the formulas, so guys go and join this particular session in which Ankit sir is going to cover the surface area volume chapter के problems. So it will be a 4-day course and obviously after this course you will become master in this particular chapter. Hello Mannat. Hi Abha. Hello Dhruv. Yes, please settle down. Yes. So talking about my next class, dear, my next class is tomorrow at the same time in which we are going to master natural resources. तो बच्चा हम क्या करने वाले हैं, हम नेचुरल रिसोर्सेज को मास्टर करेंगे. ठीक है, हम इस चैप्टर को उड़ा देंगे 45 मिनट में. तो फटाफट से ठीक है आप लोग इस सेशन में आना मत भूलिएगा. ओके, आर यू गाइज रेडी फॉर द मेंटी? मुझे फटाफट से बता दीजिए चैट बॉक्स में कौन कौन मेंटी के लिए रेडी है. Dear, please do not spam in the chat box. Okay, are you guys ready for the menti? Arey, gajab. Great. So I'm sorry, I'm not well. So there might be there might be issues with the voice. So please cooperate for the day. Okay, fine. So yes, the code is in front of you guys. It's 610849 Guys, do not forget to hit the like button. Okay, फटाफट से questions करो और फटाफट से आ जाओ मेंटी में बच्चा पार्टी. And I'll repeat the code again. It's 610849. Okay, hi निहारिका. चलिए आ जाइए फटाफट से. And yes, do not forget to call your friends. तो मेंटी में और मजा आएगा. अपने अपने फ्रेंड्स को भी बुला लीजिए फटाफट से so that we have a tough competition for this particular session. Okay, guys, join fast. menti.com को विजिट करिए. ठीक है, और ये कोड एंटर करिए. कोड इज 610849. I'm sorry. Yeah, ready everyone. We have donut, Santa, yo-yo, we have boat, we have frog, we have leopard, we have watermelon. We have so many kids around. सब बच्चे आ जाइए. Okay guys, great. So let us see what actually the first question
is trying to say, and it's an easy question. ठीक है, NCERT से ही है. चलो, and it is in front of you. Everybody, mark your answers. Cause of peptic ulcer. ये जो बच्चा peptic ulcer होता है ना, उसका cause क्या होता है? लैक्टोबैसिलस है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है, इकोलाई है, या फिर सैल्मोनेला टाइफाई है. विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ पेप्टिक अल्सर? किसकी वजह से पेप्टिक अल्सर होता है? एवरीबडी मार्क योर आंसर. ठीक है, देखते हैं. एज यू नो, मेंटी का रूल है, जितना जल्दी मार्क करेंगे उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा. बट इट डजंट मीन कि हम गलत मार्क करें. ओके, fine. Okay, fine. So we have 19 of you, those who have marked it correctly. That's great, dear. So talking about the peptic ulcer. So basically, dear, what happened during the peptic ulcer? They are the sore that develops in your alimentary canal. ठीक है, तो आपके alimentary canal में ये sores develop होते हैं, and the reason for the same is a बैक्टीरिया, दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. और ये बैक्टीरिया क्या करेगा बच्चा? सोर्स डेवलप करेगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फील पेन इन योर स्टमक. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. ठीक है, तो बच्चा आप लोग के सुनील सर भी आ गए क्लास में. ठीक है, थैंक यू डियर, थैंक यू. सो लेट अस हैव अ लुक ओवर द लीडर बोर्ड कि आज का लीडर बोर्ड क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, थैंक यू सर. Okay, so we have Kanishka leading the leaderboard with 990 points, followed by Clippy, Priyanshi and Lakshika. Sisters, साथ में खेल रहे हो क्या भाई? चलिए, hi Anshuman, hello Shivan, Sebastian, Abhinav, Kavin, Millie, Drishti. That's great. तो बच्चा पहले क्वेश्चन का आंसर है. जिसको नहीं पता था, जिसने रॉन्ग मार्क किया है, टेक अ नोटबुक एंड राइट इट डाउन दैट पेप्टिक अल्सर इज कॉज्ड बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी. फटाफट से अपने नोटबुक में लिख दीजिए. चलो दूसरे क्वेश्चन के लिए, and I'll repeat the code again for those who have just joined. The code is 61084992. I'll repeat the code. It's 61084992. Okay, fine. Are you guys ready? Okay, fine. I think all of you are ready for the question, and let us see. कर दूं start? Ready है सब लोग? Okay, fine. So yes, dear, the question is in front of you. Now, mark your answers. It's in front of you now. Tetanus is caused by which bacterium? तो इनमें से कौन से बैक्टीरियम की वजह से टिटनेस होता है? The options are because of the Salmonella typhi, because of the Clostridium tetani, E. coli, Helicobacter pylori. Easy है, ठीक है. I'm sorry. Do not write your answer in the chat box as you guys are helping others, right? Chalo. Easy है. From the name itself, the answer is in the name itself, right? तो बच्चा सैल्मोनेला टाइफाई क्या कॉज करता होगा? नाम ही बता रहा है, इट कॉजेस टाइफाइड. क्लॉस्ट्रिडियम टेटनी, इट कॉजेस tetanus. So the question is asking about which of the following is caused by which of the following causes tetanus, and the answer is Clostridium tetani. Can you tell me? Okay, can you tell me the vaccine for the same? कोई मुझे बता सकता है इसके लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स डियर. ठीक है, वैक्सीन फॉर द सेम. देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है. ओके गाइस, ओके, सो वी हैव लावण्या ने बताया. और कोई? ओके, डायनेमिक, कविन ने अभी आंसर नहीं दिया. यस, which of the following? Okay, the vaccine for the tetanus. Yeah, DTaP. Okay, हम DTaP भी ले सकते हैं, DPT. Okay,
टी टैप के भी शॉर्ट्स दिए जाते हैं, हाँ जी करेक्ट है, टी टैप और टी टैप दोनों के। ओके बहुत सही, चलो दैट्स ग्रेट, मतलब यू गाइस हैव रिवाइज्ड दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं and we'll see how many of you gonna mark it correctly, but before that let us have a look over the leaderboard. Okay, fine, so we have Priyanshi and Lakshika. Are you guys playing together? Priyanshi and Lakshika, Abhinav, Sebastian, Shivansh, Anshuman, Kavin, Janvi, Krishna, Khushbu. Thank you Riya, thanks Satan and Kanksha. So Priyanshi and Lakshika, I don't know you guys are playing together or what. अलग अलग खेलो, अलग अलग फोन से मजा आएगी, चलो अलग अलग ज्वाइन करो मेंटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है। So कोई कोड पूछ रहा था, for those who have just joined here the code is 610849 I'll repeat the code again. For those who have just joined here the code is 610849 फटाफट से मेंटी के लिए ज्वाइन कर लो जो अभी अभी आया है। ओके फाइन, चलिए रेडी है ना सब लोग। So yes, the countdown starts now and question number 3 is on the screen. What it is trying to ask. Identify the group among the following which contains all bacterial disease. तो आपको इसमें से ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसके अंदर सारे के सारे बैक्टीरियल डिजीज होंगे, मतलब वो डिजीज जो कि बैक्टीरिया कॉज करते हैं, ठीक है। टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, एंथ्रेक्स, मलेरिया, ओके, मलेरिया, एंथ्रेक्स, टाइफाइड, ओके, काला जार, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, ओके डियर। How many of you? So we have 19 of you, those who have marked it correctly. तो बच्चा मुझे फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए कौन कौन कॉज करता है, ठीक है। फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए टाइफाइड इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, ट्यूबरकुलोसिस एंड एंथ्रेक्स, फटाफट से बता दीजिए। ओके, टेल मी the name of the bacteria which causes typhoid. ट्यूबरकुलोसिस कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है, ठीक है, एंड एंथ्रेक्स, फाइन। एनीबॉडी हु नो द आंसर फॉर द सेम, आपको नाम बताना है कौन सा इसमें से ट्यूबरकुलोसिस, आपको अगर नाम पता है, ठीक है, विच पर्टिकुलर बैक्टीरियम कॉजेस टाइफाइड, या बहुत सही, चलो। So dear, typhoid is caused by Salmonella typhi. Tuberculosis is caused by Mycobacterium tuberculosis. Anthrax is caused by Bacillus anthracis. I will show you. I'll write the name for you guys on the YT. तो फटाफट से लीडर बोर्ड की तरफ देख लीजिए, उसके बाद हम YT पे नाम देख लेंगे कि कौन सा बैक्टीरिया इसमें से क्या क्या कॉज करता है। बहुत सही, ओके। So let us have a look over the leaderboard. Fine. Who is this? Okay. So Abhinav leading the leaderboard, followed by Shivansh, Anshuman, Sebastian, Janvi, Akanksha, Suhane, Khushbu. Thank you. Why do we fall in? कोई बता दो तो बच्चा, ये मैं बता चुकी हूँ, इतने सारे लेक्चर्स लिए हैं उस पे, आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए। ओके, प्रियांशी एंड लक्षिका। तो फॉर दोज जिनको नहीं है इसका आइडिया डियर, ओके, so basically typhoid is caused by Salmonella typhi. Tuberculosis is caused by Mycobacterium. Okay, it is caused by Mycobacterium. Mycobacterium tuberculosis. Anthrax is caused by Bacillus anthracis.
क्या कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है among the following, like among salmonella, among typhoid, tuberculosis and anthrax, which one is called as the sorter's disease? इसमें से sorter's disease किसको कहा जाता है? Typhoid, tuberculosis and anthrax, which one is called as the sorter's disease? Okay. Yeah, that's great यार राजनंदिनी. हाँ जी, बहुत सही. एंथ्रेक्स को कहा जाता है सॉर्टर डिजीज. यस, बहुत सही. एंथ्रेक्स, जिसको नहीं पता नोटेड डाउन कर लीजिए. वूल का, जब वूल का फॉर्मेशन हो रहा होता है ना डियर, तो तब एक स्टेप रहता है सॉर्टिंग. उस वक्त ये डिजीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं. दैट्स व्हाई एंथ्रेक्स इज कॉल्ड एज दी सॉर्टर्स डिजीज. चलिए, बहुत सही. फटाफट से दोबारा से मेंटी की दुनिया में आ जाइए. ओके, और हम देखेंगे हमारा अगला सवाल क्या कहना चाह रहा है. आई रिपीट द कोड फॉर यू गाइस. For those who have just joined, here the code is 6108492, and we'll see what actually the question number 4 is trying to say. ठीक है, so are you guys ready for the question number 4? Tell me in the chat box. How many of you are ready for the question number 4? Okay, fine. चलिए. Okay, dear. Launching the poll for the question number 4. And yes, Radha's grandfather is suffering from diabetes. In which category will you put his disease? तो जो राधा है, उनके जो grandfather है ना, is suffering from diabetes. So in which category will you put his disease? In the chronic and acute both? Cannot predict anything from this above information, chronic or acute. Okay. Fine. So how many of you? So we have 26 of you, those who have marked it correctly. बहुत सही. That's great. So guys, please just try to understand the question. Question is saying Radha's grandfather is suffering from diabetes. So basically, dear, on the basis of their span, कितने दिन तक रहती हैं, the disease has been divided into two categories, that is acute and chronic. Okay, dear. Acute disease are the diseases which are there for a very short period of time, जो कि बहुत ही कम समय के लिए रहती है. ठीक है, तो बच्चा जो बहुत ही कम समय के लिए रहती है, और chronic वो disease होती है बच्चा which is there for a longer period of time, जो कि ज्यादा time period के लिए रहती है. Okay, so diabetes, is it like this that diabetes is there for only 1 or 2 days? No, diabetes is there for a very long period of time. Hence diabetes come under the category of the chronic one. ठीक है. Okay, तो बच्चा इसका correct answer होगा chronic. Okay, because diabetes is a disease which stay for very long period of time. But talking about the common cold तो बच्चा कम टाइम के लिए रहेगा, तो हम उसको acute की कैटेगरी में रखेंगे. VIP gaming, you can write us to our help at our help desk. बच्चा यहाँ पे स्पैम मत करिए, आप अपने हमारे हेल्प डेस्क पे लिख दीजिए, आपकी वहां पे मदद कर दी जाएगी रिगार्डिंग द सेम. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले लीडर बोर्ड देखते हैं. What actually the leaderboard is trying to say. Okay, and we have Abhinav leading the leaderboard with 388 points, followed by Shivansh, Anshuman, Sebastian, Janvi, Akanksha, Suhani, Khushbu. Why do we fall ill? बता दिया. Priyanshi. That's great. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. And I'll repeat the code. It's 610. ठीक है. VIP gaming बच्चा, you have to go to menti.com. एंड आपको menti.com में बच्चा जाके ये कोड एंटर करना है. कोड मैं आपको बता दे रही हूँ. इट्स 6108492. आई रिपीट द कोड. इट्स 6108492. एंड लेट अस सी व्हाट एक्चुअली द क्वेश्चन नंबर 5 इज ट्राइंग टू से. तो
तो बच्चा 5वां क्वेश्चन आपके सामने है और क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है फटाफट से देखिए. We should now not allow mosquitoes to breed in our surroundings because they. What is the main reason that why we should not allow? Okay, okay. That why we should not allow mosquitoes to breed in our surroundings. Okay, mark this answer. 5. Okay. So we have 26 of you, those who have marked it correctly. चलो, तो बच्चा आपको क्या होता है कि we should not allow. Okay. तो बच्चा basically these mosquitoes, they are vectors for many disease. मतलब ये क्या करते हैं? I'm sorry. They carry pathogens. ये क्या करते हैं? They carry pathogen from one person to another person. For example, talking about the malaria, it is caused by plasmodium. But plasmodium को diseased person से healthy person में ले जाने वाला कौन है? Mosquito. That's why mosquito जो है वो transmit कर सकता है infection को, वो फैला सकता है infection को, ठीक है? That's why we call it as, because that's why we do not allow it to breed in our surrounding. इसीलिए हम उसको अपने surrounding में breed करना allow नहीं करते हैं. Rajnandini. Okay. Okay, Rajnandini. So basically, dear, broken leg. Okay. Attack of asthma. Asthma is basically chronic, but attack is acute. एक टूटा हुआ पैर. It can be. I'm sorry. Let us have a look over the leaderboard. Dear, do not spam the chat box. Please. So we have Abhinav leading the leaderboard with 4840 points, followed by Shivan, Sebastian, Anshuman, Akanksha, Janvi, Suhani, Khushbu, I don't know what's your name here, and Priyanshi. बहुत सही. So please do not spam the chat box, dear. Chat box को spam मत करिए. आप मेंटी में आए हैं, मेंटी में पार्टिसिपेट करिए. Yeah. We are on the question number 6 and I'll repeat the code. The code is 6108492. I'll repeat the code, guys. It is 6108492. Okay, fine. Ready, everyone? So yes, launching the poll for this particular question, that is question number 6, and let us see what actually the question is trying to say. If you guys are enjoying the session, if you guys are enjoying the question, do not forget to hit the like button, to subscribe the channel and to press the bell icon so that you get notified for the session. अब बच्चा समझने की कोशिश करिए. The process in which active immune system employs many cells to the affected tissue. ठीक है? मतलब क्या करेगा? फटाफट से बहुत सारे सेल्स को भेज देगा एक जगह पे, जिससे क्या हो, उस टिश्यू को हील करा जाए. तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इन्फेक्शन कराएंगे, इन्फेस्टेशन कहलाएंगे, इन्वेजन कहलाएगा या इन्फ्लेमेशन कहलाएगा. वीआईपी गेमिंग इतने ही दिखते हैं डियर, इतने ही दिखते हैं. दैट्स ग्रेट. सो 18 ऑफ यू. ऑब्वियसली डियर, इम्यून सिस्टम की बात हो रही है, तो इम्यून सिस्टम इज अ सिस्टम which fights with the disease. ठीक है, जो कि डिजीज से फाइट करता है. तो बच्चा, what happened during inflammation, when there is any toxic enter inside the cell, what does the immune system do? Immune system send a lot of cells to the affected region. Affected region पे बहुत सारे cells को send करेगा और वहां पे अलग अलग चीजें होगी. You will feel the swelling, you will feel the pain. मतलब वो heal करने की उसको कोशिश कर रहा है. तो उसको क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को इन्फ्लेमेशन कहते हैं. प्लीज वीआईपी गेमिंग, डू नॉट स्पैम द चैट बॉक्स डियर. बच्चा ऊपर के ही बच्चे दिखते हैं. ओके, लुकिंग ओवर द लीडर बोर्ड, व्हाट इट इज ट्राइंग टू से. फाइन. Abhinav is again on the top of the leaderboard, followed by Shivan, Sebastian, Anshuman, Suhani, Khushbu. Thank you. बता चुकी हूँ मैं बच्चे. Why do we fall ill? Akanksha, Priyanshi and Ashutosh. Wow, that's great. All of you are doing great and I'm sorry for the same.
ठीक है, बहुत आवाज में दिक्कत है। ओके फाइन, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर दोज हु हैव जस्ट ज्वाइन। बड़ा बच्चा फटाफट से मेंटी की दुनिया में ही रहिए और क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहना चाह रहा है। आई रिपीट द कोड अगेन, इट्स 610849 एंड व्हाट एक्चुअली द क्वेश्चन इज ट्राइंग टू से। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। ओके चलिए, and it is in front of you. Antibiotics used in the treatment of bacterial and fungal disease. तो बच्चा बैक्टीरियल और फंगल डिजीज को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक यूज की जाती है। अब आपको ये बताना है कि वो जो एंटीबायोटिक है डियर, वो किसकी बनी होती है। ओके, मार्क योर आंसर्स। ओके, VIP Gaming, I have replied to your comment that it is not possible. So please, dear, do not spam the chat box. What actually the antibiotics are? Fine, that's great. So बच्चे एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द एंटीबायोटिक्स, तो थोड़ा एंटीबायोटिक्स को समझेंगे कि एंटीबायोटिक्स होते क्या है, and then we'll talk about this particular question. But before that, let us have a look over the leaderboard. Okay, fine. Okay, that's great. Yeah. So we have Shivansh leading the leaderboard, followed by Anshuman, Suhani, Abhinav, Sebastian, Mansi, Khushbu, Akanksha, what do you call it, Rajnandini. तो बच्चे एक बार एंटीबायोटिक्स को समझने के लिए थोड़ा सा आप लोग वाईटी की तरफ आ जाइए। मैं आपको बताती हूँ एंटीबायोटिक्स क्या होता है। एक नूर सिंह, प्लीज डू नॉट स्पैम द चैट बॉक्स डियर। ओके, so basically dear, what are antibiotics? So antibiotics are the chemicals, ठीक है। तो बच्चे क्या है, suppose let us consider that there is a microorganism A, ठीक है। There can be some chemicals, some products which are released from this particular antibiotic and it may use to kill and it may use to destroy this particular antibiotic. तो बच्चे ये products होते हैं, products of the metabolism of some microorganisms. For example, okay, for example, suppose let us consider that there is a fungi penicillium. तो बच्चा इससे कोई टॉक्सिक सब्सटेंस निकलेगा और ये स्टेफाइलोकोकस को किल करने में हेल्प कर सकता है. So they are used to kill the other microorganism. I hope it's clear to all of you. फटाफट से मेंटी की दुनिया में आ जाओ, फिर मैं आपको और क्वेश्चंस कराती हूँ. Okay, come. Fine. Ready? चलिए. Now, चलिए क्वेश्चन देखते हैं. I'll repeat the code dear. It's 610849 I'll repeat the code for those who have just joined and I'll repeat the code is 610849. Great. And let us see what actually the question number 8 is trying to say. The question is on the screen. It was found that the milkmaids who had cowpox did not suffer from the smallpox later. तो जब बच्चा वैक्सीन की डिस्कवरी कैसे हुई, देखा गया कि वो काउपॉक्स जो कि वो मिल्कमेड जो कि काउपॉक्स से सफर हो जाती थी, उनको स्मॉलपॉक्स नहीं होता था. ठीक है, कैसे, वाई? Since smallpox virus is closely related to the cowpox virus, scientists have not yet worked out the reason for this. Since cowpox is deadly than smallpox, since smallpox is more deadly than cowpox. If you remember the discovery of the vaccine, then guys, go, you can answer this question or else go and watch my session. I have already taken a session on the vaccine. हाँ जी बच्चा. तो basically vaccine, what are the vaccine? Vaccine are the weekend germ. तो बच्चा जब cowpox enter कर जाता है milkmaid में, it will result in the formation of antibodies, and as
स्मॉल पॉक्स इज वेरी सिमिलर टू द कॉपॉक्स, तो वो एंटीबॉडीज जो होती हैं वो स्मॉल पॉक्स के वायरस को मारने में भी काम आ सकती हैं. दैट्स वाई वो मिल्कमेड जिनको काउपॉक्स हो जाता था उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता था. सो द 17 ऑफ यू हैव मार्क्ड इट करेक्टली. दैट्स ग्रेट. Okay, looking over the leaderboard. Fine. So we have Suhani leading the leaderboard with 7015 points. That's great. So बहुत सही बच्चे, हम 9th question पे हैं. I'll repeat the code for those who have just joined. The code is 6108492. Okay. So everybody is ready. If you guys are enjoying the session, आपको questions अच्छे लग रहे हैं, so do not forget to hit the like button. फटाफट से like button को hit कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. चलिए क्वेश्चन देखते हैं. So question number 9 is on the screen, and yes, let us see what actually the question is trying to say. Hi Akansha, please join the Menti by using the code. Now, the set of the disease which spread through the sexual contacts as well as through placenta to the fetus. ठीक है, तो बच्चा आपको वो बताना है जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है. ठीक है, जो कि सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से स्प्रेड होती हैं या फिर मदर से बेबी में वाया प्लेसेंटा स्प्रेड हो सकती हैं. The options are malaria and AIDS and syphilis and malaria, or AIDS and cancer. It's easy. Basically, it's clear from the question that you need to tell the sexually transmitted disease. Time is very less. Let us see how many of you are going to mark it correctly. Okay, so we have 20 of you, those who have marked it correctly. Yes, dear. AIDS and syphilis, they both are sexually transmitted disease. So, बच्चे ये कैसे हो सकती हैं? ये सेक्सुअल कांटेक्ट के थ्रू या फिर मदर से फीटस में हो सकती हैं वाया प्लेसेंटा. So, the correct answer is option number B. Okay, leaderboard. Thank you, Niharika. Fine. So we have Suhani leading the leaderboard, followed by Abhinav, Shivansh. Why do we follow? Akansha, Rajnandini. I'm good, dear. Niharika, thank you so much. Priyanshi, Ashutosh, Anshuman. बहुत सही, बहुत अच्छा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है. Okay, so we are on the question number 10. Still we are left with five questions. Let us see what actually the question number 10 is trying to say. I think everybody is ready. Okay. प्लीज आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए मेंटी डियर. अगर ऐसा कुछ इश्यू हो रहा है, आई रिपीट द कोड 6108492. फाइन. Okay, so question number 10 is on the screen and question is here. Which of the following is not a symptom of any disease? ठीक है, इनमें से किसी भी डिजीज का सिम्टम कौन सा नहीं है? मेनिंजाइटिस, हेडेक, कॉफ एंड स्वेलिंग. ओके, आई विल रिपीट इट. Which of the following is not a symptom of any disease? Meningitis, headache, cough or swelling. चलिए मार्क करिए. ओके, fine. So we have 20 of you, those who have marked it correctly. That's great, dear. Basically, meningitis is the inflammation of meninges. जो हमारी ब्रेन होती है ना बच्चा, ठीक है, उसको 3 मेम्ब्रेन कवर कर रही होती है. तो अगर उन मेम्ब्रेन में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ सम इन्फेक्शन, इट इज कॉल्ड एज meningitis. So meningitis is not itself a infection. meningitis जो है, ठीक है, वो खुद एक इन्फेक्शन नहीं है. Okay, so we have 20 of you, those who have marked it correctly. चलिए, looking over the leaderboard. Okay. Fine. So we have Abhinav leading the leaderboard with 8610 point, followed by Shivansh
Shuhani. Why do we fall in Akanksha, Niharika, Rajnandani, Ashutosh, Priyanshi and Mansi? That's great. It's okay, dear. You focus on the question. Okay? Okay. You focus on the question, dear. Fine. So we are on the 11th question. And what actually it is trying to say? चलिए देखते हैं. Chalo. And yes, the question is here. Purified antibiotic penicillin of the Penicillium notatum was discovered by. Mark your answers. Question is saying purified antibiotic penicillin of the Penicillium notatum was discovered by. No need to write your answer in the chat box. Why are you telling other the correct answer? Okay, okay, guys. Mark your answers. Please maintain the decorum of the class. Oh, बहुत से. So we have 23. ठीक है, बहुत सही बच्चे. So Alexander Fleming is the one जिन्होंने एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था. भैया ये जिन जिन लोगों का गलत मार्क हुआ है ना, go and write it in your notebook or on any paper that antibiotic, the first antibiotic which was discovered is penicillin from a fungus Penicillium notatum and it was discovered by Alexander Fleming. Alexander Fleming ने discover किया था. ठीक है, चलो लीडर बोर्ड देख लेते हैं. Okay. So we have Abhinav leading the leaderboard with 9590 points. That's great. All of you are doing great. चलो बहुत सही. क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है. ठीक है. I hope that you guys are ready. I'll repeat the code again at 6108492. And yes, hello Aman. Please participate in the Menti. And yes, the question is in front of you. Mark your answers, all of you. Okay, it's an easy question. It is saying people residing in coastal areas usually do not face the problem of thyroxine hormone deficiency because their food intake will be rich in one of the following minerals. Try for the next time, dear. Okay. People residing in coastal areas usually do not face the problem of thyroxine hormone deficiency because their food intake will be rich in one of the following minerals. It's easy. It will be rich in sodium, will be chlorine, it will be iodine, or it will be phosphorus. Okay, so we have 17 of you, those who have marked it correctly. बहुत है. तो बच्चा हमें भी बोला जाता है ना आयोडाइज्ड सॉल्ट. सुना है आयोडाइज्ड सॉल्ट. ठीक है. तो बच्चा आपको आयोडाइज्ड सॉल्ट खाना चाहिए क्योंकि जो आयोडीन होता है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन. दैट इज फॉर द वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है. ओके, लीडर बोर्ड की तरफ देखते हैं. हु इज लीडिंग द लीडर बोर्ड? व्हाट्स योर नेम डियर? योर नेम इज रेलगाड़ी छुक छुक छुक. Okay, so we have Abhinav, Shivansh, Suhani, I don't know what's your name, Niharika, Gansha, Mansi, Rajnandani, Railgadi, Chuk Chuk Chuk, wow, what's your name? And Ashutosh on the leaderboard. Chalo, question number 13 देखते हैं. Hello. Chalo, ready everyone? And let us see कि question number 13 कहना क्या चाह रहा है. And yes, it is on the screen. Hello Sakshi, hi Shivansh. बच्चा क्वेश्चन करिए. Which of the following is not a viral disease? इसमें से viral disease कौन सी नहीं है? Code is 6108492. 6108492 is the code and the question is asking which of the following is not a viral disease? Dengue, AIDS, typhoid, influenza. It's good dear, it's very good. आप और भी अच्छा कर सकते हैं. Okay.
is not a viral disease. Fine. So we have 12 of you, those who have marked it correctly. Typhoid. Abhi हमने पढ़ा that typhoid is caused by Salmonella typhi, which is a bacterium. Okay, so dengue, AIDS, and influenza, they all are caused by viral. Dengue is caused by dengue virus, AIDS is by HIV, influenza is by influenza virus. So the correct answer is typhoid. Okay, leaderboard. ये किसने रखा अपना नाम? I like it. So we have Abhinav, Sivansh, Suhani. Why do we fall in? Thank you, Niharika. Kanksha, Mansi, Rajnandini, Ashutosh, and Railgadi Chuk 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 are on the leaderboard. Okay, fine. We're on the 14th question. We are on the second last question. So, guys, only 2 questions, then we'll have the leader of the day. So, question number 14. And yes, let us see what it is trying to say. 610849 is the code, and the question is saying which of the following disease is caused by worm. इसमें से कौन सी worm की वजह से होती है? Okay, measles, poliomyelitis, tuberculosis या फिर elephantiasis. Okay, which of the following disease is caused by worm? Measles, poliomyelitis, tuberculosis, elephantiasis. Osmosis is the transport of molecule from its higher concentration to the lower concentration. Railgadi chuk chuk chuk. Yeah, Anupriya. Okay, so we have 15 of you, those who have marked it correctly. Hanji bacha. Elephantiasis is caused by, okay, elephantiasis is caused by worm. Measles is a viral disease. It is basically the infection of the salivary glands. ठीक है, salivary glands का इसमें infection हो जाता है measles में, या elephantiasis में जो पैर होते हैं, जो limbs होते हैं, उनकी swelling हो जाती है. ठीक है, ओके, लीडर बोर्ड देखते हैं. Okay, that's great. So we have Abhinav, Shivansh, Niharika, Akanksha, Mansi, Suhani. Why do we fall in? Ashutosh, Railgadi, Chuk Chuk Chuk, Raj, Nandini are on the leaderboard. Okay. Thank you, Anupriya. Thanks a ton. Last question, all of you. So yes, this is the question. Okay. जो कि बताएगा who will be on the top of the leaderboard. And yes, it is here. It should be protozoan actually. That is but obvious. Which of the following disease is caused by protozoan? ठीक है, protozoan से कौन सी disease होती है? Measles, poliomyelitis, tuberculosis, malaria. Which of the following is caused by protozoan? Measles, poliomyelitis, tuberculosis, malaria. Okay. So we have 15 of you, those who have marked it correctly. Hanchi bacha, malaria is caused by okay. Malaria is caused by Plasmodium, and the vector for the malaria is Anopheles mosquito. So, bacha, malaria is the correct answer. Let us have a look over the leaderboard. Lysis of the plasma. Okay. So we have Abhinav leading the leaderboard with 1, 3, 4, 4, 3 points. Congratulations to you, dear. I'm sorry. You have done very well. Congratulations to you, Abhinav. Wow, that all of you have done very well. बहुत अच्छा. That's great. Okay, guys. So yes, everybody come to the YT. So I can give you some important information. Okay. Sorry.
तो बच्चा फटाफट से मैंने आपको जैसे बताया दैट नेक्स्ट मिनी कोर्स इज अबाउट सरफेस एरिया एंड प्रॉब्लम्स व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज 5 बजे से क्लास शुरू होगी। तो अगर आपको लगता है कि आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम के क्वेश्चंस में डाउट है, आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा कि हाउ टू अप्लाई द फॉर्मूलाज, वेयर टू अप्लाई, गो एंड जॉइन दिस पर्टिकुलर क्लास बाय अंकित सर। श्योर यू गोना मास्टर इन दिस पर्टिकुलर chapter. And yes, those who have still not downloaded the GoPrep live learning app, guys, go and download it from Google Play. You'll get a lot of facilities. For example, doubt clearance facility, a lot of interactive classes, and so on. And yes, do not forget to join me on my Telegram group. The link for the same is given in the description box. So you can ask your academic and non-academic doubts, okay, through Telegram. So see you all in the next class. Till then, all of you take care and stay blessed. And do not forget to catch me live at 3 p.m. tomorrow, in which we are going to cover the next chapter of the exam Abhyaas session, that is natural resources. हम cover करेंगे. So yes, 3 p.m. tomorrow. Take care. Thank you so much. Thank you. Bye bye.